I really needed a mentor, and I was like, how can I just go back and open without knowing anything? So I was really searching here also for someone I can learn from. But this came right at a time when I needed it, and I would say I've learned so much, so many new things. I would say everything was so theoretical, and practically also during our masters and during our internship also we were just following theoretical wise only, like in theory this says this is contraindicated, no we can't do this, we can't do that. So many things we're following the theory wise only. But once I learned from ma'am, like it's not always what is written in the book, not following theory, but you have to. So it's different from what I learned. Yeah, the mindset back before enrolling for this course and now it's really different. Yeah. You all are like not only teaching this for the career, for our career, but as a person also, so much of change I have experienced. I mean, I can't explain it in my words. So वो हमेशा सवाल रहता था कि how to start, what all things from basic, the infra, the management thing. So this physiopreneur course is like so MBA में जैसे verticals होते हैं. Correct. So there is operations, there is this. So this is MBA in physiotherapy. I felt that all verticals, jo HR, operations, everything has been covered. I mean, so beautifully designed, and like not everyone is keen to share your secrets. Right. But you all are so selflessly doing it. I mean, really. Thank you. Thank you so much. And then I thought that no, I should do something, and I मतलब हिम्मत करके एक स्टेप ले लिया स्टार्टिंग में, like 1.5 year back I did L1, and वो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम का जो एक पॉइंट है मैम आपका, इट्स वंडरफुल, आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरा थिंकिंग ही सब चेंज हो गया। वो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम का चीज मैंने अप्लाई किया एंड पेशेंट स्टार्टेड कमिंग उससे ही मतलब मैंने L2 किया भी नहीं था, मैंने वो प्रोटोकॉल वो सब अप्लाई किया भी नहीं था, बट वो जो है ना सॉफ्ट स्किल, जो खुद का बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, पेशेंट को कैसे आपको कन्विंस करना है, कहते फॉर देयर इम्प्रूवमेंट यू आर डूइंग समथिंग। सो ये चीज ने तो मतलब पूरा वही चेंज ही कर दिया, पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड कि कितना मैम ने उसमें दिमाग लगाया होगा, कितनी बुक्स पढ़ी होगी, हाउ डिड यू, मतलब आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, इतना वेल परफेक्टली प्लान्ड कैसे क्या कर सकते हो आप, आई डोंट नो। और आई कैन सी द रिजल्ट इन द पेशेंट्स, बट आई कैन सी दैट थिंग्स विल इम्प्रूव एंड आई एम कॉन्फिडेंट, एंड थैंक्स टू यू सर। मतलब ये जो चीज है ना मैनेजमेंट का, मतलब ना पैकेजिंग, मतलब वो मतलब जो कोर्स में हम लोग देते हैं, एंड फिर हमारा माइंडसेट हमको कैसे रखना है पेशेंट से बात करते वक्त, टाइम मैनेजमेंट, तो हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो पूरा सार है, सारी टाइम मैनेजमेंट की बुक्स का सार है वो जो हमारा चार्ट है। कुछ भी कर लो, वो चार्ट अगर नहीं फॉलो किया तो सब बेकार है, ऐसे है। So let's become the legendary now. Chalo, good night, bye bye, and wish you all the very best. Yeah.